आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट माय ओन फेलियर्स। रियलिटी ये है दैट फेलियर्स टीच अस वेयर एज सक्सेस इज द रिवॉर्ड ऑफ दोज लर्निंग्स। बट हम लोग नॉर्मली सोचते हैं कि फेलियर्स हमें कुछ नहीं सिखाते एंड सक्सेस इज द अल्टीमेट लर्निंग दैट वी गेट, द अल्टीमेट लैडर पे चढ़ना। अगर हमें ऊपर जाना है तो हमें सक्सेस ही बता सकता है। दैट इज ट्रू। बट अगर आपको उस लैडर पे ऊपर जाना है, इफ यू वांट टू गेट दोज रिवॉर्ड्स, रीप दोज रिवॉर्ड्स, देन यू हैव टू टेक योर फेलियर्स सीरियसली एज वेल। बिकॉज सक्सेस आपको कभी भी कुछ नहीं सिखाएगा। इट्स फेलियर्स which is going to teach you whatever you need to learn to be able to get that success that you want in life। तो इन फेलियर्स के बारे में बात करना और टू इनेबल यू टू लर्न फ्रॉम योर ओन फेलियर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ये आपको सिखाना चाहता हूँ थ्रू माई ओन फेलियर्स एंड थ्रू माई ओन लर्निंग्स। मैंने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। जो मैंने सीखा उसके थ्रू मुझे क्या क्या सक्सेस मिला, एंड वट एवर आई डिड नॉट लर्न थ्रू दैट वट आई मिस्ड इन लाइफ। एंड इट्स वेरी नॉर्मल। हम लोग कभी सीखते हैं, कभी नहीं सीखते हैं। इट्स परफेक्टली नॉर्मल फॉर अस टू बी लाइक दिस एज ह्यूमन बींग्स। आते हैं फेलियर्स की तरफ। सबसे पहला मैं आपको, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट बैंक एग्जाम्स और एग्जाम्स इन जनरल, तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। आई वांट टू स्टार्ट विद 2012, द ईयर दैट आई रोट माय फर्स्ट यूपीएससी एग्जामिनेशन। 2012 में मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन और लिखना शुरू किया एग्ज़ाम को। It was my first attempt where I cleared prelims, where I cleared mains, and I write that I cleared interview because I received very good marks in my interview as well. But I could not clear my final cutoff. That is when I say that I was not selected. Interview में I scored a very good 180, which considered to be above average score, जो कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे लग रहा था काफ़ी अच्छा था। But ultimately I found that my name was not there in the final list। तो इससे मैंने सीखा क्या, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये तो एक इन्फॉर्मेशन हो गई जिससे स्टूडेंट्स को पता लगता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या। बट व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम दिस? नंबर वन, आई लर्न दैट देयर शुड बी अ प्लान बी। देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ प्रिपेयरिंग फॉर टू ऑप्शंस एट वन टाइम। इसमें कोई गलत नहीं है। The condition is that you cannot sacrifice or compromise upon any one option out of these two options। आपको दोनों को अपना full effort देना पड़ेगा। If you feel that you can do that, then why not have a plan B in line, in full form running along with your plan B, plan A as well। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्लान बी नहीं होना चाहिए, डजंट वर्क। बट आई फील दैट इट वर्क्स गिवन दैट देयर इज अ कंडीशन हियर। एज आई सेड, यू हैव टू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनी ऑफ दीज टू प्लान्स। ये मैंने सीखा और इसके बाद मैंने प्लान बी के बारे में सोचना शुरू किया। व्हाट डिड आई नॉट लर्न? मैंने क्या नहीं सीखा? knowing my strengths and weaknesses before moving forward, this is what I could not learn because मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्री मेंस इंटरव्यू तीनों एक्सपीरियंस कर चुका था। सो आई फेल्ट दैट आई डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ वीकनेसेस टू लुक फॉर। अगर मैं सेम ही साइकिल को रिपीट करूंगा, आई विल फाइंड सक्सेस। With that idea, I forgot and I overlooked the aspect that I should work upon my strengths and weaknesses। मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, सो दैट आई कैन रिपीट अपॉन दो सेम। और मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मेरी वीकनेसेस क्या हैं, सो दैट आई कैन ट्राई एंड रिड्यूस दोज वीकनेसेस, जिससे कि दोबारा वो फेलियर ना देखना पड़े। अब मैंने ये नहीं सीखा, इसकी वजह से मैं आया सेकेंड अटेम्प्ट पे, विच वॉज इन द ईयर 2013। 2013 में मैंने यूपीएससी के साथ आरबीआई भी लिखा। दैट वाज माय प्लान बी व्हिच आई लर्नड फ्रॉम माय फर्स्ट फेलियर। I cleared prelims in UPSC 2013, but I could not clear mains। Now, you might feel that I could not clear mains because of uh, plan B in place here, but that is not the case। I did not clear mains because of my own other mistakes, और उसके बारे में मैं shortly बात करूंगा। RBI, I wrote for the first time in 2013। I cleared mains, I cleared prelims, I went for the interview, but I could not clear it। Now, I don't say that I cleared interview because I performed horribly in the interview। I got very less marks, and that is why I consider that I did not clear interview in this phase। What were the learnings here? क्या क्या मैंने सीखा और क्या क्या नहीं सीखा? योर ट्रेन ऑल्सो हैज़ रिवर्स गियर, ये सबसे पहली लर्निंग थी। आई वॉज अज्यूमिंग कि जब मैं यूपीएससी में इंटरव्यू तक जा चुका हूँ, तो मैं सेकेंड अटेम्प्ट में भी सेम चीज़ें रिपीट करके इंटरव्यू तक चले जाऊँगा। आई विल बी एबल टू रीच देयर एंड आई जस्ट हैव टू पुट इन अ लिटिल मोर हार्ड वर्क
in order to clear the examination, but the same did not happen because I did not know my weaknesses. And this was the major learning that I received कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में पता होना चाहिए था, बट यहाँ पे मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे नहीं पता था. एंड व्हाट वाज अनदर लर्निंग, नॉट टू टेक एनी एग्जाम लाइटली. ये मुझे आरबीआई में रियलाइज हुआ. Whatever I had learned and whatever knowledge I had gathered through UPSC, that enabled me to clear RBI pre and mains easily, but I did not take the interview very seriously. I felt कि UPSC में 180 आए थे, बहुत अच्छे नंबर थे, यहाँ पर भी मैं ले आऊँगा, and I performed horribly. That made me realize that I'm taking my plan B lightly, और वो मुझे नहीं लेना है. And because you have to repeat the cycle all over again, that made me move forward to 2014 when I attempted these examinations again. और ये मेरा almost final attempt था with UPSC and RBI. 2014 में again I cleared prelims, I cleared mains, I cleared interview. Now I say that I cleared interview because I scored even better in this year's examination interview. मेरे score था 195, which was even better than last year's. और यहाँ पर मैक्सिमम जो मार्क्स थे इंटरव्यू के वो भी कम हो गए थे. इवन देन आई वॉज एबल टू स्कोर वेरी वेल, बट फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं था. नाउ व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम दिस? इफ यू डोंट नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, यू हैव नॉट गिवन योर बेस्ट. मेरे दिमाग में ये एक, और पेरेंट्स भी बोलते हैं, आपके रिलेटिव्स भी बोलते हैं, आपके पीपल हु लव यू दे ऑल्सो टेल यू कि तुमने अपना बेस्ट दिया, दैट इज इनफ. But I realized it later that if you don't know your strengths and weaknesses, especially your weaknesses, then no matter how hard you work, you actually have not given your best because you don't know yourself enough. If you don't know yourself enough, आप अपना बेस्ट कैसे ही दे पाओगे? That is when I realized that I feel that I have given my best, but actually I have not given my best because मुझे अपनी strengths और weaknesses के बारे में अभी तक नहीं पता है. मैं उनको ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहा हूँ. ये 2012 से चलता आ रहा था. 2012 में मुझे रियलाइज होना चाहिए था व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, बट 2 साल बाद भी मुझे वो रियलाइजेशन नहीं था. Anyways, I wrote SBI again in this year in 2014 and I was selected. And the reason I was selected in SBI as a PO in this year was because I did not take this exam lightly. So this was the learning that I received from RBI in 2013 कि मैं किसी भी एग्जाम को लाइटली नहीं ले सकता हूँ, नहीं लेना चाहिए, और इसलिए अच्छे से लिखते हैं जो भी एग्जाम लिखते हैं और उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं. एंड दैट वाज व्हाई आई क्लियर्ड SBI in 2014. In the same year, I also cleared Delhi School of Economics का जो entrance exam होता है. I cleared that as well. And again, the reason was I did not take it lightly. I remember very clearly, I was very very serious about this exam because मुझे लग रहा था कि ये मेरा एक way out है, ये मेरा एक तरीका है so that I can start my life all over again. I can kickstart the process of learning, of earning, of doing something further than graduation. तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे एंड आई कुड सक्सीड इन दीज टू बिकॉज आई डिड नॉट टेक देम लाइटली. ये मेरी लर्निंग थी जो मैंने सीरियसली ली. नाउ दीज वर माई रिवॉर्ड्स, दीज वर नॉट माई फेलियर्स, दीज वर माई सक्सेसेस. बिकॉज and because of this I say that I did not learn anything from them, but I reaped some rewards because of these. But ultimately, when I joined SBI and simultaneously I started studying in Delhi School of Economics, I realized that I have to look for happiness. चाहे मैं कोई भी एग्जाम क्लियर कर लूँ, चाहे कितनी भी बड़ी नौकरी में काम कर लूँ, अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज वेदर यू आर हैप्पी डूइंग इट और नॉट. नो मैटर हाउ सक्सेसफुल यू आर, आपका कितना रुतबा है सोसाइटी में, इट डजेंट मैटर एट ऑल इफ यू आर नॉट हैप्पी. And that is what I realized when I started working in SBI and when I started studying in DSC. तो मुझे realize हुआ कि मुझे ultimately I have to look for happiness, otherwise ये successes का कोई मतलब नहीं बनता है. And it was an accident that I found that happiness in teaching. I used to teach my own colleagues, my own classmates during their free time and my free time in DSC. उसके थ्रू मुझे रियलाइज हुआ that this is something that I really like, and my peers also told me, my friends also told me कि यार तुम पढ़ाते हुए बड़ा अच्छे लगते हो, you teach very well, you do it very well, why don't you do it professionally? That is when I realized that if I'm looking for happiness, this is where I might find it. And this is where learning number 5 came in. And this was, don't be afraid of hitting rock bottom. I had already hit rock bottom when I could not clear these exams in 3 long years, 12, 13, 14.
एंड आई फेल्ट कि एसबीआई फिर से छोड़ना बड़ा मुश्किल काम होगा. आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. बट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी हिट रॉक बॉटम एंड आई रियलाइज कि ये इतना मुश्किल भी नहीं है जितना लग रहा है. Yes, it is difficult. I have to survive on my own. I have to pay my own pocket money. I have to do some freelancing work in order to make a living, but it is doable. इतना मुश्किल भी नहीं है, इंसान कर सकता है. And when I had hit rock bottom, I realized that I'm not afraid anymore of going there again, of trying something new, of going out and doing what I really love, what gives me happiness. And this was my learning number 5, which gave me the strength of going out there and starting with my own channel on YouTube, on starting with my own group on Facebook, on doing the hustle and making sure that I give my best here as well. मैं अपना बेस्ट यहाँ पर भी दूँ, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आइडेंटिफाई करूँ, एंड आई स्टार्ट वर्किंग ऑन टीचिंग एज well as I can. So these were the major learnings that I received from my failures, I feel. और आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे मेरे सक्सेस के थ्रू भी एक मेजर लर्निंग मिली कि अगर आप एक बार रॉक बॉटम पे जा चुके हो, इट डजेंट मैटर वेदर यू हिट इट अगेन और नॉट, बिकॉज देन यू विल नॉट बी अफ्रेड एनी मोर, और आप एक्चुअल में वो करना कर पाओगे विच यू एक्चुअली लाइव लव, दैट यू एक्चुअली लाइक, जो आप एक्चुअल में करना चाहते हो, समथिंग दैट गिव्स यू हैप्पीनेस. यू विल बी एबल टू फाइंड दैट once you have hit rock bottom because you're not fearful anymore. आपको किसी भी चीज़ का डर नहीं है. Yes, there were moments when my relatives and people who were uh, you know uh, often judgmental, they used to judge me and feel and look at me as if I'm a failure, I'm not doing anything in life, I'm not getting anywhere. But somehow I had stopped worrying about all those things, और मैं उसको पॉजिटिवली लेने लगा था. आई had stopped taking it negatively. I had stopped worrying about what they're thinking. Instead, I kept focused on what was important for me and what gave me happiness. Or ultimately, when I found that, when I found the love uh, towards teaching, then I was not afraid anymore, because मुझे लगा कि अब it doesn't matter how successful I am, whether I'm able to do well or not. At least I'll be able to do what I know that I really like. So ultimate objective है, through your learnings, through your successes, through your failures, try to figure out what is it that you actually love doing, और उसके पीछे जाओ. और ज़्यादा पीछे चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे डोंट मैटर. दे आर ऑल शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स और शॉर्ट टर्म जजमेंट्स दैट यू गोइंग टू गेट, और वो सब धीरे धीरे वैनिश हो जाते हैं. अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग टू गिव यू अल्टीमेट हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन इन योर लाइफ इज डूइंग व्हाट यू रियली लव. तो अगर आप सोच रहे हो कि एसबीआई में नहीं हुआ, आईबीपीएस में नहीं हुआ, तो मैं सेटल डाउन नहीं कर पाऊंगा, या फिर मैं अपनी फैमिली को क्या बताऊंगा, स्टॉप वरिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स. येस, दे आर इम्पॉर्टेंट, बट दे आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट एज वेल. ओके, अगर आप सर्वाइव करना जानते हो आउट देयर, इफ़ यू नो हाउ टू मेंटेन योर सेल्फ, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, physically, mentally, spiritually, then you will be able to do it once you hit rock bottom nonetheless. कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So these are the major learnings that I feel कि आपको भी अपनी लाइफ से सीखनी चाहिए, अपने फेलियर से सीखनी चाहिए, so that you can move forward with life without any fear, without getting scared by all those mountains out there. Don't be afraid of hitting rock bottom. Let's repeat these again so that we're able to memorize them and remember them. Know your strengths and weaknesses, and if you have not known your weaknesses, that means you've not given your best. This is harsh, but this is true. Okay, do not take anything that you want to do lightly, feeling कि ये तो मैं कर ही लूंगा. uh, there should be a plan B, given that with the condition that you cannot compromise your plan A for your plan B and otherwise as well. Your train also has reverse gear. If you're successful to a certain extent today, doesn't mean that you will reach the same level tomorrow as well. ये एग्जाम्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है. Therefore, be very concerned and be very, very serious about this issue. And do not take any exam lightly, जो मैंने already आपको बता दिया है. So this was all for this small discussion where I wanted to discuss my own failures. I hope कि students भी यहाँ पर आके comments में अपने खुद के failures लिखेंगे,
the moment you start saying it out loud, it becomes easier for you to deal with them because अब सबको पता है, अब खाली आपको नहीं पता है, अब सबको पता है, तो अब छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है. It's better to deal with it rather than trying to hide it. Okay? So write it down there so that we can have a healthy discussion about our failures as well. Probably we can learn something from our failures and they can help us succeed in the coming future. All the best. Keep studying. I'll see you once again. Bye bye. Jai Hind.